Hello, everyone. I'm Shahzeb Usman, and we welcome you to our conversation. Today, we will be discussing nuclear laws, Pakistan, and nuclear weapons. We are very happy to have Mubashar Rizvi, who is a researcher and data analyst at the Research Society of International Law. His research focuses on great power politics, USA, and Chinese foreign policy, nuclear deterrence, and geopolitics of South Asia. He's particularly interested in exploring the intersection of international relations and international law and how the two work in tandem to shape the foreign policy postures of smaller states. Hello, Bashir. How are you? Hello, Shahzeb. I'm doing well. Thank you for having me. Hope it's not very cold in Oxford right now. No, no, it's not. Okay. Well, my first question is about the role of Pakistan in evolving international nuclear laws in the international arena and how Pakistani domestic law is catering to these international law obligations. Right. I think overall, Pakistan has been playing a very positive and a very favorable role, especially in the recent years. I think one way of judging this is by looking at the nuclear security index reports. This is a report that is put together by the Economist Group, or आपको इसके तहत पता चलता है कि how countries are performing on different metrics with regards to nuclear security. आप उस रिपोर्ट का 2020 वर्जन देखो तो उसमें पाकिस्तान was ranked as the most improved state. Hmm. अभी उसका 2023 में there was an updated version. Or so what this report does is it ranks states on the overall protection of nuclear facilities, and security of nuclear material. So in the security of nuclear material, Pakistan was ranked 19th overall, which was an improvement of three, and which represented an 3 point improvement on the 2020 report. और इसी तरह जो प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटीज में भी रैंक 32nd, और इसमें आपका जो है क्या कहते हैं योर स्कोर इम्प्रूव बाय 4 points एज कम्पेयर टू the previous iteration of the report, which was in 2020. Once you go into the nitty-gritties of the report, you'll see like Pakistan ke domestic commitments jo hain, they increased by 11 points. Domestic nuclear legislation. So 2020 में एक बड़ा point था कि Pakistan, even though it scored 67 out of 100 points in domestic nuclear legislation, is Hmm. dafa we increased that by 33 points. So now Pakistan is like ranking at a maximum of 100 points in this regard. We also improved in a lower level पे जाके हमने 20 points पे अपना score increase किया with regards to activities against illicit actors. Yeah. So काफी चीजों में Pakistan has been doing well, but it's also consistently improving its score. Hmm. इसी तरह आप उसके अंदर और देखो तो the UNSCR 1540, the Security Council Resolution 1540, which Hmm. focuses on nuclear material and nuclear weapons, and whether how that should not be allowed to go to non-state actors. Usme Pakistan has scored a maximum points. Hmm. Pakistan has an independent regulatory authority. So all these points जब आप इनको देखो, so Pakistan is doing really well. And domestic front, Pakistan इस पे काफी ज़्यादा काम कर रहा है. Hmm. Now, obviously, that does not mean there's no room for improvement. There's always room for improvement, but we can discuss that later. Perfect. Perfect. I think, what we see about, for example, Article 2H. So, it defines the nuclear damage in a very expansive way. And it's something that, again, shows that because whenever the states are trying to oblige to the international commitments, they try to make it restrictive. But here we have a very expansive interpretation of nuclear damage. And therefore, I think it really shows our seriousness, in my opinion. And I think that was reiterated by the IAEA chief when he came to Pakistan very recently. So No, I I think agree with that's a you. that's हाँ, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. और डोमेस्टिक लेजिस्लेशन की जब हम खास तौर पे बात yeah, करते हैं पाकिस्तान की, सो दो एक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं वैसे तो. वी हैव द इम्पोर्ट, मतलब न्यूक्लियर की को उसके लाने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए, वी हैव द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल्स एक्ट, पाकिस्तान yeah. एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा. लेकिन जो Mm, दो एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो एक आपका न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है विच yeah, वाज पास्ड इन 2001, and mm, then there's the Export Control on Goods, yeah, Technologies, Material Equipment Act of 2004. जो पहले वाला है इसमें से 2000, और इनकी बिकॉज, and as जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हाउ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क. इन दोनों mm, एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस की आप टाइमिंग देखें तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो mm, 2001 वाला न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है, ये mm,
आप अगर इसके टाइमलाइन देखें तो थोड़ा सा पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, विच आफ्टर विच वी बिकेम Yeah, yeah. एन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, राइट। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने टेस्ट किए, टेस्ट करते साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1172 आती है विच कंडेम्ड बोथ कंट्रीज कि आप लोगों ने गलत किया एक्सेट्रा, लेकिन द फैक्ट वाज कि आप जो है यू वर नाउ अ न्यूक्लियर पावर वेदर द वर्ल्ड लाइक्ड इट और नॉट। Yeah. नाउ वंस यू रीच दैट स्टेट, आपने दुनिया को अपनी कमिटमेंट शो करनी है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अगर Mm. इसको आप in the global system you cannot be an outcast, you need to voluntarily bind yourself into these global governance mechanism, जैसा अभी जो Mm. सारा फैटफ में सारा चल रहा था, it was Yeah, a yeah. different of the same global governance structure. Mm. सो पाकिस्तान ने 2001 में न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस पास किया, और इसका प्राइमरी पर्पस था कि आपकी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएनआरए एस्टैब्लिश होती है। Mm. लेकिन जो अच्छी बात है इस ऑर्डिनेंस की वो ये है कि it's very uh, it's focused but it's also very at the same time very broad. So जैसा Mm. आपने बताया कि न्यूक्लियर डैमेज की उसने बड़ी एक्सटेंसिव डेफिनेशन की है, सो इट कवर्स लॉस ऑफ लाइफ, पर्सनल Mm. इंजरी, लॉस, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। Yeah, yeah. न्यूक्लियर इंसिडेंट को बड़ा अच्छा वो करता है, लेकिन जो मुझे इसमें बहुत अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि इट ऑल्सो कवर्स लॉस ऑफ डैमेज टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज Yeah, yeah. everyone's talking about the environment and how to protect the environment, लेकिन I think that's also an important thing to Yeah. consider. But at the same time another so उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 39 है जो आपको Mm. एनवायरमेंटल सर्वेलेंस के बारे में कहता है कि आप रेडिएशन इमरजेंसी प्लान्स डेवलप करें। सो हम पाकिस्तान को अक्सर काफी चीजों में रगड़ रहे होते हैं कि हमारे पास ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, लेकिन आई थिंक दिस इज वन एरिया वेयर वी डन रियली वेल। इसी Mm. का एक और इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल 38 है, जो विच Yes. empowers the PNRA to Mm. enter into cooperative arrangements with other states and international organizations। और Mm. इसके साथ सो अगेन जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि यू आर voluntarily binding Mm. yourself into these Mm. international works, working with other entities। और उस सारों में आके we're like ठीक है, we are a responsible state, we're willing to work with others, we are a nuclear power but we're not an irresponsible nuclear power। So I think that's where the PNR the nuclear regulatory authority Mm. ordinance that does a really good job। Mm. Mm. I think I agree with you. And I think the Pakistani commitment is very obvious in this regard. But do Yeah, you find any evolving areas of, nuclear laws which Pakistan should also focus on? We have a good domestic structure, but there must be some room for improvement, of course. So, do you find any evolving areas on which we I should think focus? globally, as far as I've studied, one of the biggest concerns right now is the proliferation of nuclear technology। Hmm. पाकिस्तान को लेके दुनिया का अक्सर ये कंसर्न भी ये रहता है। एंड जो मैंने आपसे पहले एक एक्ट जो दूसरा कहा था, द अदर इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, द एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन गुड्स टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल रिलेटेड टू न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट Yeah. वाज पास। और उसका भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक बैकग्राउंड है। Hmm. So everyone knows about the AQ Khan episode, what happened in 2004, February 2004 में अब्दुल कदीर खान जो है, he confessed to being part of this global illicit network of nuclear trade। Hmm. और सितंबर 2004 में पाकिस्तान ने ये एक्ट पास किया। Hmm. Pakistani government has always maintained, and कि AQ Khan was acting in an individual capacity, there was no official patronage। लेकिन at the same time जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, we need to reiterate our commitment to international Hmm. क्या कहते हैं norms, कि यार नहीं, we take proliferation very Hmm. seriously। और Yeah. this is one area which is evolving, in जिसमें Hmm. पाकिस्तान has regularly Hmm. shown its commitment कि yeah, no, we are very serious about Hmm. proliferation, we continue to be serious about proliferation। और इसका जो इस एक्ट के तहत पाकिस्तान की जो आपकी एफबीआर की कंट्रोल लिस्ट, एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट रेगुलरली अपडेट होती हैं, उस Hmm. इस एक्ट के तहत उसको भी अपडेट कर रहे होते हैं। आई थिंक द लास्ट Hmm. आई चेक April 2022 में was the last time when I checked it was updated। So Hmm. that's one area which is constantly evolving। आप अभी भी देखें तो प्रोलिफरेशन नेटवर्क्स के बारे में ग्लोबली देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न, बट आई थिंक पाकिस्तान इज डूइंग अ गुड जॉब। आई वुड आल्सो से, बट आई थिंक दिस नीड्स टू बी स्टडीड मोर, कि जो रीसेंट पाकिस्तान ने एक्ट्स अपने पास किए विद रिगार्ड टू एफएटीएफ, उसमें Hmm. भी हम काफी, एंड अगेन दिस इज आई हैवंट स्टडीड दिस इन ग्रेट Hmm. डिटेल, बिकॉज रिसेंटली पाकिस्तान का स्कोर इस कैटेगरी में भी इम्प्रूव हुआ है कि इलिसिट एक्टर्स के खिलाफ हम करेंगे। सो दैट्स Hmm. पर आपका इंटरनेशनली उस पर कंसर्न है, बट पाकिस्तान उसके ऊपर भी वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन दैट। Great. And I think what is really fascinating about all of this is that how our departments, from military, civil, are coming together for a common purpose.
or common purpose of national security. So I think Yeah. that is something which reflects in this particular act, and No, which I absolutely. that is important for because this is such a sensitive matter that if everybody doesn't come together, it will not be solved. So we Yeah. need to have a very holistic style of government if we really want to effectively deal with it. So that is an aspect I really like about this और नहीं, particular. और आप इसमें, अगर आप इसमें देखें भी कि मतलब वी आई ऑफन आर्ग्यू दैट पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम poor reputation as opposed मतलब there are areas in which we can improve. Hmm, I'm not saying that the whole world is out to get us, hmm, लेकिन इस तरह की भी जब होते हैं, सो hmm, 2011 के आसपास जो है क्या कहते हैं, जब पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में डिप आया था, so hmm, there was an article which was published in the Atlantic. I'm forgetting the exact title, but it was somewhere along the lines of the ally from hell or something. और hmm, उसमें भी यही कंसर्न था जी, पाकिस्तान कोलैप्स करेगा, इनके न्यूक्लियर वेपन चले जाएंगे, hmm, एक्सेट्रा। अभी रिसेंटली फिर अफगानिस्तान के बाद ये इसी तरह की यू वुड हैव हर्ड सिमिलर वॉइसेस। hmm, बट इंटरेस्टिंगली व्हाट यू वुड हैव नोटिस्ड इज कि hmm, पाकिस्तान में कोई मटेरियल ब्रीच नहीं हो रहा, ना hmm, आपकी hmm, फैसिलिटीज का, ना न्यूक्लियर मटेरियल का। India, on the other hand, they enjoy a hmm, good reputation globally. They're hmm, obviously, we understand that they're in close ties with enjoying close ties with the US right now. But India में आप देखते हो कि कभी जी बाजार में कोई यूरेनियम खुला लेके फिर hmm, रहा है, कोई और इस तरह की चीज हो रही है। So I hmm, think as you correctly pointed out कि इसमें credit goes to all our state agencies, yeah, security and non-security, in doing a hmm, good job. But I think more needs to be done in highlighting this. आई yes, थिंक yes, वो एक आपका रेपुटेशन पाकिस्तान की बनी हुई है ना एज ए इररिस्पॉन्सिबल स्टेट। अभी ये जो hmm, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव मैंने मेंशन किया था, hmm, hmm, उसमें hmm, देयर आर मेनी मेट्रिक्स इन विच वी रैंक हायर देन इंडिया। देयर hmm, आर सम आई थिंक जिसमें हम यूएस वगैरह से भी वो रैंक करते हैं ज्यादा। hmm, सो यू नो आप इसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई एम नॉट hmm, श्योर इफ यू अवेयर ऑफ द टर्म ब्रोकन एरो इंसिडेंट्स। ब्रोकन एरो hmm. इंसिडेंट इस तरह के इंसिडेंट जहाँ पे ना आपके न्यूक्लियर कोई वेपन्स गो मिसिंग। Do you know Oh, the US has the greatest number of missing nuclear weapons? They are unaccounted for. जहाज से गलती से ड्रॉप हो गए, एक जहाज टूट गया मिड एयर, न्यूक्लियर वेपन्स गिर गए। सो दीज आर hmm, द काइंड ऑफ वुड एसोसिएटेड, मतलब नॉर्मली आपके जो द फेयर मॉन्गर्स विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, वो ऐसे इंसिडेंट्स पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करेंगे। ना पाकिस्तान में खुलेआम बाजारों में यूरेनियम बिक रहा है, ना हमारे कोई hmm, न्यूक्लियर वेपन्स अनअकाउंटेड है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, पाकिस्तान इज डूइंग अ रियली गुड जॉब। आई जस्ट थिंक वी नीड टू हाईलाइट hmm, इट अ बिट, these are the things that we're doing well, and hmm. also at the same time जो हम रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट हैं उनके ऊपर हम फोकस करें, मजीद इसको बेहतर करें। Totally, I agree. And I think propaganda is always a product of money. If you have enough money, you can shape the narrative. I think that's very clear. And या that is it. I remember I had the chance when Rafael Grossi, the chief of IAEA, visited Pakistan. I had the chance to be at the seminar where he was addressing. It was in the Serena Hotel. And some reporter asked him that, how do you find the security of Pakistan's nuclear weapons? And he said in a heartbeat, he said that it is impenetrable, it is world class. And that was, I think the technical people know that. It is just the media, it's just the propaganda machines that try to develop this narrative. So I think and Pakistan needs to counter that internationally. I think we need to focus, we need to work on highlighting our key issues, which we need to have worked a lot, and that is not generally highlighted. Even you mentioned FATF, we worked so much on it. Pakistan has worked so much on it, and we have done a far better job than many other countries, but it was used as a political stick, and the media narrative was very strong there against us. नहीं बिल्कुल। और देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये मतलब Hmm, इंडिविजुअल कैपेसिटीज में नहीं कह रहे, ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज रिसर्च ग्रुप है जो न्यूक्लियर hmm, सिक्योरिटी इंडेक्स पब्लिश करता है। वो कहता है कि जी hmm, पाकिस्तान की फैसिलिटीज आर वेरी सिक्योर। वो कहता है कि जी hmm, आपकी मटीरियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू एंड आई आर सेइंग एंड hmm, पेडलिंग कंस्पिरेसी थ्योरीज के जी लोग hmm, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। लाइक आई सेड, वी जस्ट नीड टू डू अ बेटर जॉब इन propagating the good that we're doing, because we हम reputational hit constantly पाकिस्तान लेता रहता है उसमें, hmm. we can counter some of that. Yeah, totally agree. And I think that's a general issue. Any Pakistan reputational crisis, and anything that we do gets highlighted like 100 times, and any good thing we do is just not highlighted at all. So I think it's a general issue that Pakistan faces, and more particularly about the nuclear weapons, of course, because it's something which is
threatening, I would say, to the West in a way that a country like Pakistan has this. But the next मतलब question यार is देखिए, about, yeah, yeah, please. नहीं सॉरी प्लीज गो अहेड। No, no, please, you were मतलब say something. मैं ये बस ये कहने लगा था कि ऑब्वियसली देयर इज प्रोपेगेंडा बट देयर इज आल्सो always there is always room for improvement, Of and I course. think there are ways in which we can Hmm, so for example अभी जैसा और and these are very minor things, so for example जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में आपकी आती है, hmm, some of the improvements given for Pakistan was कि insider threat prevention को आपके systems को आप secure करें। अब कहने को ये लगता है कि यार ये बड़ी कोई intrusive सी चीज होगी, but when you go down and look at the details of के वो क्या कह रहे हैं hmm, कि यार जो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे काम कर रहे हैं उनके रेगुलर ड्रग टेस्ट हों, उनके रेगुलर सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक्स हों, एंड आई एम श्योर व्हेन आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ दिस मटेरियल आई थॉट कि इनमें से hmm, काफी चीजें जो पाकिस्तान कर रहा होगा, hmm, हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने वो नहीं है कि जी कोई नशा करके न्यूक्लियर प्लांट पे आके कोई सा करके दे आर ऑब्वियसली कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, बट hmm, जस्ट बिकॉज वो हम कहते हैं कि यार इट्स जस्ट hmm, ticking those boxes and further improving your hmm. reputation. The one Yeah. thing which where I realize कि हमें काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी, उस पे काफी ज्यादा आता है Yes, पाकिस्तान yes, yes, yes. it's wholly in Yeah. that, again that's not my area of expertise, लेकिन यहाँ पे भी Hmm, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव says कि आपका जो है ना you can work more। इसी तरह इंटरनेशनल कोऑपरेशन में सब्सक्राइबिंग टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सर्कुलर्स इंसेक्स कहते हैं, इसमें अच्छा hmm, अब अगेन यहाँ पे भी काफी चीजें दे आर डबल एज सॉर्ड, सो सम hmm, पीपल से पाकिस्तान शुड बाइंड इटसेल्फ टू इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, इसमें एक जो कमिटमेंट बहुत ज्यादा आती है वो ये है कि which is often mentioned as the International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism। yes, yes, अब yes. ऑन द फेस ऑफ इट आप कहोगे यार पाकिस्तान को साइन करनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा हर Hmm, चीज को देखता हूँ इंडिया इसका पार्टी नहीं है, एंड with a lot of these international agreements you also want to see कि they should not be used against you। yes, yes, yes. पाकिस्तान ऑब्वियसली इसको स्टडी करे, लेकिन जितना ज्यादा अपने आप को एम्बेड कर सकते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स के बीच में आई थिंक वी शुड। और ये जो छोटी Hmm, छोटी मैंने आपको चीजें कही थी, आई एम श्योर वी डू ड्रग टेस्टिंग, आई एम श्योर वी डू बैकग्राउंड चेक्स, जस्ट hmm, हाईलाइट, एंड नेक्स्ट टाइम देयर इज एन असेसमेंट बीइंग डन लेट दी assessors hmm, know कि यार ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, so your hmm, perception improves even more in the eyes of hmm. all the strategy analysts। Great. And I agree with you. And I think I'm not a big fan of signing international treaties just for the sake of, being looking cool. I think a lot of our government officials have done that. Oh, we have ratified this, we have ratified this, and now we're so human rights friendly. And they came back to, haunt us, yeah, especially the bilateral investment treaties that we signed. So I think, and same, I think they're asking us now to sign international Rome Statute and for some GSP plus status, and that is disastrous for our country. It's a political institution, international criminal law, international criminal court. So I am also very much against such kind of behavior. I think we should analyze the treaty, see if it suits us, sign it, sure. Otherwise, have our own domestic structure. I'm not against preservation of the individual rights of human beings. So that's very important, but we can do it domestically. Why do we need to have a ratification internationally? Um, Yeah, but उसमें उसमें so again yeah. with a lot of these treaties, I really don't know about them. But one thing which is interesting is, and if you're you might want to look at this, is the Hmm. US, they are actually involved in the development of a lot of these treaties, but they don't actually sign or ratify them. Mhm. So, but again, we are not comparable to the US. Well, Like, I remember. I think it was the Convention on the Rights of Children, and probably they are the only one in the world who hasn't signed it. Maybe it's so I it's I like think there's a lot more. My colleague at RSI, Elisha, she speaks a lot about this, like, and because she focuses a lot on international criminal law as well. The वो बताती है कि, like, with so many of these things, the US is yeah. involved in the development, but they never really sign those They treaties. even So have something like invading the Hague if something happens अच्छा, मुझे to इस them. बारे में नहीं So पता। they have an Hague Invasion Act in my from what I know that if अच्छा नहीं, इसमें anything I'm not aware of this। so it's a very old it's an old style of people who rule the world. It's capitalism for you, socialism for us. It's so they're very when it comes to their interests, they are very very much united, and also they really don't care whether they sign the treaty or not. It's basically for the other. So that's at least my analysis of strategic relations. I might be wrong. But let's come back to our topic a little. Do you think the treaty on the prohibition of nuclear weapons developing into some form of customary international law? Because customary international law is something which I feel is very much entrenched in legal system.
So when a particular law becomes a customary international law, I think most of the states adhere to it. Do you think that there will be a global politics shaping this into a customary international law, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons? Yeah. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। इसमें जो है ना, there's a few things to understand first. पहले तो आप ये समझें कि the treaty on the prohibition of nuclear weapons, the TPNW, ये है क्या। इसमें यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा पुश आ रहा है टू, Hmm. मतलब इसको जितनी रैटिफिकेशन इसकी हो सकती हैं हों, जितने Hmm. सिग्नेटरीज हों, और एंड लाइक यू सेड के डेवलप Hmm. दिस इनटू सम फॉर्म ऑफ कस्टमरी लॉ। Hmm. But Hmm. like I said, पहले हम समझे कि what the TPNW does and why is it different than things that Hmm. existed before it. So आपके जब जब न्यूक्लियर रेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपकी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आती है, PTBT। Okay. Yeah. This banned nuclear testing in the atmosphere, the outer space and underwater. Hmm. Yeah. Pakistan is signatory to the partial test ban treaty. Hmm. उसके बाद आपकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, which was focusing Hmm. on preventing the spread of nuclear weapons and Hmm. nuclear weapons technology. So Hmm. what the NPT did it is divided the world into what they call nuclear haves and have-nots। 5 nuclear weapon states को उन्होंने कहा कि यार ये recognized nuclear weapon states हैं, इसके अलावा जो भी Hmm. होंगी they are non-nuclear weapon states। अब Hmm. इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान, इंडिया, North Korea and Israel, they hold Hmm. nuclear weapons. Like they're legally not nuclear weapon states. Hmm. Pakistan's Hmm. not part of NPT. Pakistan says that yeah, it's non-discriminatory Hmm. in nature. Like I said, it divides the globe into nuclear haves and have-nots, and at the Hmm. same time, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को नहीं एक्नॉलेज करती। Hmm. इसके बाद आपकी आती है जी CTBT, Hmm. द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। वो कहती है Hmm. ऑल काइंड ऑफ टेस्टिंग शुड बी, आपको खत्म कर देनी चाहिए। Hmm. CTBT के लिए Pakistan has a favorable stance. Pakistan is, like I said earlier, is a signatory of the PTBT, the Partial Test Hmm. Ban Treaty. Hmm. CTBT पाकिस्तान इसलिए नहीं साइन करता कि इंडिया इज नॉट साइनिंग इट। सो पाकिस्तान ने कहा, बट पाकिस्तान स्टांस इज वेरी फेवरेबल। सो पाकिस्तान सेज के पाकिस्तान हैज यूनिलैटरली साइंड अ मॉरेटोरियम ऑन टेस्टिंग कि हम वी विल Hmm. नॉट द वन टू रिज्यूम टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन साउथ एशिया। एंड दिस गोज बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर कि हमारे काम अच्छे हैं, हम एट टाइम्स उनको हाईलाइट नहीं करते, रेपुटेशनल Hmm. हिट होती है। Hmm. Pakistan also said that if India wants, we would consider transforming this moratorium into a bilateral agreement with India. Hmm. इसके बाद आपकी एक और आई थी FMCT, fissile material cut off, कि there is a threshold of fissile material। Fissile material is weapons grade Hmm. material that you Hmm. इससे ज्यादा नहीं। पाकिस्तान this has never proceeded past a negotiation state। पाकिस्तान हमेशा इसको ब्लॉक कर देता है because Pakistan Hmm. says it's discriminatory। so ये आपकी अभी तक की सारी वो हो गई। Hmm. TPNW, hey, so you have the treaties banning testing, banning possession of Hmm. nuclear weapons. Hmm. So the logical question is, कि Hmm. how is TPNW different? And Hmm. अगर and then कि इसकी जरूरत ही क्या थी? Hmm. Hmm. What TPNW does is what no other treaty is doing at this point is it comprehensively bans the development, the possession, the testing of all nuclear weapons. And at the Hmm. same time, it imposes a responsibility on existing nuclear weapon states कि Hmm. आप जो हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करेंगे। आप थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं कर सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। Hmm. सो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 1 ऑफ द ट्रीटी है, वो रीइटरेट्स द ऑब्लिगेशंस इन प्रीवियस ट्रीटीज कि आप डेवलपमेंट और टेस्टिंग ट्रांसफर नहीं होगी। आर्टिकल Hmm. 4 उसका है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को कहता है कि आप अपने Hmm. न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करें। Hmm. Hmm. None of the nuclear weapons have yet signed or ratified it। This then brings to your question के क्या Hmm. ये एक Hmm. कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में तब्दील हो सकती है कि नहीं। Hmm. नाउ ऑन पेपर अगर देखा जाए ऑप्टिमिस्टिकली तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ यार कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। Hmm. Hmm. और बट आई ऑलवेज आर्ग्यू कि ये जो न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट्स हैं उनकी दिस रिप्रेजेंट्स देयर होप एंड डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट Yeah. रियलिटी। बिकॉज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बनने के लिए आपको एक चीज जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड द परसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव रूल। Yes. So Yes. long as the state has consistently objected to an international custom during its formation, कि अगर एक कस्टम बन रहा है लेकिन हम Hmm. कहते हैं कि यार ये कस्टम तो बन रहा है लेकिन हमारे Hmm. ऊपर ये लागू नहीं होगा, तो वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ आपके ऊपर लागू नहीं होता। एंड Hmm. अगर आप सारी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की स्टेटमेंट्स देखें, सो दे हैव रिपीटेडली सेड Hmm. कि अगर ये कस्टम बन जाता है तो हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं करता। सो एंड Hmm. अगेन अगर हम पाकिस्तान का स्टांस देखें,
फॉरेन हम्म ऑफिस की जो अगर आप स्टेटमेंट देखें TPNW के ऊपर, तो पाकिस्तान उसमें भी कहता है कि पाकिस्तान हैज स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस अबाउट दिस ट्रीटी, और पाकिस्तान stresses that the treaty neither forms or nor contributes to the creation of a customary international law. तो इवन अगर बाकी मुल्क एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बना लेते हैं, इसको हम्म अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और बाकी वेपन्स के ऊपर वो अप्लाई नहीं करेगा। सो टू योर क्वेश्चन, क्या ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन सकता है? यस। वुड दिस अप्लाई देन अप्लाई ऑन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड लीड टू a complete elimination of nuclear weapons? I don't think so. Perfect. I think this is one of the very rare cases where Pakistan has a very consistent state practice. They have very, very clearly maintained that this is something which we are not okay with, and very clearly. So I think if we can do this here, we can do other areas of international law too, where we have a consistent opinion on evolving issues of international law, where it could become customary international law. या एंड आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे पाकिस्तान बीन वेरी प्रोएक्टिव। आप जनरली पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉ और Mm, ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आप पाकिस्तान का बिहेवियर देखो, इट्स वेरी रिएक्टिव। कुछ हो mm, जाता है, हम उसके बाद कहते हैं कि यार अच्छा अब mm, करेंगे। जो mm, mm, FATF था, दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस। mhm. वाज द FATF यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल बाय इंटरनेशनल एक्टर्स? यस। Yes, इंडिया ने yes. बहुत एविडेंस के इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने की कोशिश की है, लेकिन एट द सेम टाइम वर देयर शॉर्टकमिंग्स इन पाकिस्तान डोमेस्टिक लीगल स्ट्रक्चर? यस। हमने जब तक फैटफ की वो तलवार हमारी गर्दन पे नहीं आई, तब तक हमने उसको वी डिड Mm, नॉट एड्रेस। इसमें ये है mm, कि पाकिस्तान वेरी रिएक्टिव, मैं प्रोएक्टिव। मैं आपको एक और mm, एग्जांपल देता हूँ। mm, 96 97 में पाकिस्तान रैटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। अब mm, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर ये है, बिकॉज एनी टाइम वी रैटिफाई ट्रीटी, उसके बाद वी नीड टू हैव डोमेस्टिक लेजिस्लेशन विच इनकॉर्पोरेट्स दैट ट्रीटी इनटू आवर डोमेस्टिक लॉ। mm, अब 96 97 में आपने एक ट्रीटी साइन कर ली है। It mm, wasn't until I think 2023 or 2022, my dates might be a bit off, कि हमने we passed a domestic law which incorporates that into our international mm, मतलब जो हमारी उनको उनको स्टेट प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज वन एरिया वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, कि जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि यार हमने ये एक चीज़ है, आपको नजर आ रहा है कि whether that's a treaty that you're signing, whether that's a global governance norm that's developing, we need to have a much more proactive approach. And I think, as you rightfully pointed out, जो हमारा our behavior with regards to nuclear law and evolving nuclear standards, that's mm, been very very proactive. mm. इसमें भी अगेन इट्स नॉट ऑलवेज बिन द केस, आई थिंक सो। जिस तरह हमने वो देखा था विद द AQ खान नेटवर्क दैट आई मेंशनड अर्लियर, Yeah, उसके yeah. रिस्पांस में मतलब इट्स नॉट ऑफिशियल के वेदर दैट लॉ वाज डेवलप्ड एज अ रिस्पांस, बट फरवरी में एक चीज हो रही है, फिर आपका लॉ पास हो रहा है। सो अगर ये चीजें आप पहले पहले करते जाएं, बट आई थिंक इन द न्यूक्लियर realm we've done really well in this regard. Mm. I agree, I agree. And I think this is one of the rare cases where, again, every aspect of Pakistani government have come together and done something very, very articulately, I think. So in a very synchronized manner, every State Department has worked in it. But one thing I wanted to flag out of your opinion about is about India. We had a recently an Italian delegation coming from a think tank, and I remember that Italian gentleman said that Pakistan is so big that it seems very unfair that we do everything as a reaction to India, or we have some kind of this obsession that whatever we do, it will be somehow our policies will be dictated by them and dictated by their behavior. So, and he said that, it's sad because Pakistan is such a big country with so much potential that this seems like this reactive approach to India is somehow eating up away our potential. So, uh, and I am not endorsing that gentleman's opinion, of course. I have my own opinion about it, but just to state his opinion, what do you think in terms of, as you said, we are not signing this particular treaty because India is not signing it, and we want both. I personally have my own opinion about it, but if I just restate that Italian gentleman's opinion, what do you think? Yeah, so I'll restrict this to the nuclear realm, right? So मैंने CTBT की बात की थी कि CTBT पाकिस्तान इसलिए नहीं साइन कर रहा कि इंडिया नहीं साइन कर Hmm, रहा। अब CTBT किस चीज को रोकती है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग को ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। hmm, सही है। आप टेस्टिंग क्यों करते हो? hmm, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेहतर करने के लिए, उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। पहले आपका अगर hmm,
इतना बड़ा कोर है तो आपको लगता है अगर आपको सेम यील्ड चाहिए शायद आप उसको छोटे लेवल पे ले आओ. Hmm. That's what the US and the Soviet Union and all these other Western countries were doing throughout the 50s and the 60s before they stopped Hmm. testing. अब अगर पाकिस्तान टेस्टिंग सीटीबीटी साइन कर देता और इंडिया नहीं करता, सो व्हाट Hmm. दैट डज इज कि इंडिया हैज अ स्पेस टू कैरी ऑन टेस्टिंग Hmm. and improve the quality and the yield and the efficacy of its nuclear weapons. और पाकिस्तान उसी जगह फंसा हुआ, राइट? Hmm. अब वैसे तो आप इसको कहो कि यार आप क्या मतलब यू आर इन्वॉल्व इन दिस, अब ये बचकाना एक वो आप उसमें अपनी रट लगाई हुई है कि हम नहीं Hmm. करेंगे, लेकिन यू हैव अ वेरी सीरियस एंड रियल सिक्योरिटी कंसर्न फ्रॉम इंडिया. Hmm. ठीक है. Hmm. So I think it's in other areas maybe his assertion and assessment was correct कि ठीक है we should Hmm. not tie all our decisions with India, and I agree with them, but I think इस field में we you You can't have no really other dismiss choice. the Yeah. reality of the threat that Yeah, exists yeah, from of India. course. आप अगर Oh. इंडिया के साथ आज आप एक एग्रीमेंट साइन करके कह देते हैं कि अच्छा जी हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देंगे, तो व्हाट इज टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम यूजिंग देम अगेंस्ट यू? The only Hmm. thing I think that prevents India from doing a lot of things is your nuclear weapons arsenal. Yeah. Yeah. Whether that should come at the expense of development in other segments of the country, that's a separate debate. लेकिन अगर purely आप security perspective से देखो, so I don't think uh, it's unreasonable कि हम इंडिया के साथ डिटैच कर सके. And it's easy for a lot of these. I always Westerners to say understand that. जो बंदा Yeah. बात कर रहा होता है, Yeah. they have opinions, उनकी अपनी political Yeah. socialization चल रही होती है, that's based on their own experiences. Hmm. Pakistan, Hmm. India, and if you expand it, China, we're a unique case Hmm. Hmm. where new where new adversaries, nuclear adversaries are sharing borders. ये Hmm. आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलता. Yeah. Yeah. सो फॉर समवन टू से कि यार आप इंडिया को ना करें, आपका यूएस और यूएसएसआर का फ्लाइट टाइम जितना होगा पाकिस्तान इंडिया का 6-7 मिनट का. 2 साल पहले 22 में जब इंडिया एक्सीडेंटली दैट्स व्हाट दे से फायर्ड द ब्रह्मोस मिसाइल, व्हाट Hmm. वाज टू से कि उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था. Hmm. नेवर नो, बिकॉज बाय द टाइम यू मेक दैट डिसीजन इधर आके सब कुछ करके तबाही कर चुका होता है. उस वक्त भी Hmm. आई थिंक पाकिस्तान एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली. व्हाट आपको व्हाट वाज स्टॉपिंग अस फ्रॉम लॉन्चिंग अ वॉरहेड इन रिस्पॉन्स कि अच्छा नहीं इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया तो अब हम भी अटैक करते हैं. सो इस पे आई डोंट नो, आई थिंक इट्स नॉट वेरी अनवाइज Hmm. कि हम इंडिया को नहीं कंसिडर करते. साथ साथ Hmm. इस तरह के जितने मामले हैं आई थिंक वी Hmm. शुड have an eye on what India is doing because it concerns our national security. Hmm. 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 Well, I agree with you. I personally also think that if I extend this argument, like why then America is so obsessed with Russia, I can also just extend this argument there that every US foreign policy is now dictated by Russian obsession. So I think it's very easy for the Westerners to say these things when they are looking at a detached perspective, but when you realize when you live here, it's another reality. So I always think that I agree with your opinion, but I think I had to be the devil's advocate to give the other opinion on this particular No, issue. fair point. Yeah, but coming to the actually, it's a perfect timing for my next question because this theme elongates there as well. What do you think? If I ask common man in the street, or if I ask people who are representative of Pakistani people, they say, and a lot of even strategicians also believe that the Pakistan is only protected by its nuclear weapons. The only thing that is protecting Pakistan is the possession of this technology. And that the presence of this technology makes it a threat to the West. That such a poor country, how can it develop such a big thing and cause dissonance with the West? And a lot of people now say that since our defense is impenetrable due to the presence of such nuclear weapons, now they want to balkanize Pakistan through these structural adjustment programs of International Monetary Fund, through this liberal economic principles where the globalization is form of a trap for countries like Pakistan in a way like neo-colonization. So what do you think about this particular aspect? Like if I just be a voice of somebody who's not a international lawyer or somebody who's not interested in international relations, um, I think the first thing they will say is this. And to be honest, sometimes it makes sense.
Yeah, there's a lot of layers to your question, and I think this is the kind of question जहाँ पे I feel I'm going to get into trouble, लेकिन let's देखा जाएगा. We are all यार getting into देखो, this action. are nuclear weapons the biggest guarantor of our Yeah. security? And मतलब when I think of security, मैं mostly जो हमारा biggest security threat है, मतलब आप वो देखो तो सबसे ज़्यादा इंडिया से आता है. I say yes. Is the Mm. West happy with our nuclear weapons? No. Would they want us to give up our nuclear weapons? No. Yes, obviously they would. Should we? Absolutely not. We have seen the Libyan example कि उनके साथ क्या हुआ है as The soon as Ukrainian one, I think. sorry. The Ukrainian one, you know. So Ukraine का there's a lot of there academics जो debate करते हैं that they were technically Soviet weapons, so that was a Yeah, but they different case. still wouldn't, if they wouldn't have given up, they would, if I हाँ, was seeing, they would have. लेकिन लेकिन लिबिया एग्जांपल जो है आपके पास सबसे uh, रिसेंट है. दे वर डेवलपिंग अ mm, प्रोग्राम, दे गेव इट अप इन टर्म्स mm, इन रिटर्न फॉर इन promises of mm, aid and whatnot from the West, and within a decade of mm, them giving up their nuclear program, आपने देखा mm, कि where Libya is right now, mm, they were their reports के open slave markets etc वहाँ पे चल रही होती हैं. So Pakistan should definitely not give them up. mm, Now IMF तरह के programs, they're being used to balkanize Pakistan. Yeah, but that's a long. So I have a counter question for you. mm, Why are they not balkanizing India? Why mm, did India went to the IMF in the 90s? एक ही दफा गया, I think. I could be mm, wrong, लेकिन अब mm, बाकी बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इम्पैक्ट कर रहा है उसका जिस तरह हमें कर रहा है. आई थिंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला ये है कि सो मुझे आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट. आई नो आई हैव I know people are more learned to talk about these things. I know IMF programs, मुझे सिर्फ इतना पता है they are tough. लेकिन at the same time हमारी भी एक persistent जिद है कि हमने अपना we are not willing to put our house mm, into order. mm, हम शॉर्ट टर्म फिक्सेस की तरफ जाते हैं कि mm, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं अपना मुल्क बेहतर करने के लिए उनमें वी आर नॉट दैट इंटरेस्टेड. लाइक आई सेड, सो अगर इसी के मैं आपको एग्जांपल दूं, सो द FATF ब्लैक लिस्टिंग इन ग्रे लिस्टिंग इन 2018. डिड यू नो mm, 2018 में पाकिस्तान पहली दफा ग्रे लिस्ट नहीं हुआ था. हम इससे mm, पहले भी 2 दफा ग्रे लिस्ट हुए हैं. एंड mm, हमारा हमेशा रिस्पॉन्स ये रहा है कि अच्छा यार ठीक है देखा जाएगा, ग्रे लिस्ट ही है mm, ना, और क्या होगा. एंड दिस इज द टाइम जब पाकिस्तान में एक बड़ा फेमस नेटवर्क था, खनानियन कालिया नेटवर्क. दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ड्रिंग मनी फॉर mm, ड्रग कार्टेल्स एंड व्हाट नॉट. और उसको फिर एक हमने उनको भी क्लीन चिट दे दी थी डोमेस्टिकली. फिर एक mm, इट वाज स्टिंग बाय द फाइव आईज. उन्होंने पकड़ के दे कॉर्नर्ड द गाय, दे गॉट द एविडेंस एंड देन mm, उसको प्रोसिक्यूट किया. mm, 2018 में भी हम फैटफ को सीरियसली नहीं ले रहे थे. 2018 जून में हम FATF में हम ग्रे लिस्ट हुए हैं. एक साल हम बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे, अच्छा ठीक है mm, कौन सा पहली दफा हुआ है. इट mm, वाजंट until I think 2019 when we realized कि यार this time they're serious, we might be blacklisted. The mm, implications of being blacklisted are very severe. Now mm, let's start putting our house in order. और mm, उसमें like you repeatedly mentioned this, use this phrase के it was a very synchronized effort by our security and non-security agencies जहाँ पे हमारे nuclear laws are concerned. लेकिन mm, यहाँ पे आके आई वुड से कि यू आर राइट, मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन वहाँ पे एक एलिमेंट ये था कि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं थे. जब mm, FATF आपकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान को लेजिस्लेशन पास करनी थी, एक पॉइंट के mm, ऊपर आके यू कुडंट पास लेजिस्लेशन बिकॉज सर्टेन पॉलिटिकल एक्टर्स थॉट कि अगर ये लेजिस्लेशन पास हो जाती है सो mm, इट इम्पैक्ट देम. सो mm, उन्होंने, और वी वर वंस अगेन स्टेयरिंग डाउन द बैरल ऑफ बीइंग ब्लैकलिस्टेड. mm, सो लाइक आई सेड earlier, are do countries use these global governance mechanisms? The IMF is one such mechanism to coerce you, to corner you as an international political tool. Absolutely. लेकिन at the same time this is not to take away from the fact कि आपकी अपनी हरकतें भी काफी काफी एरियाज में they need improvement. mm, एंड अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स को देखो, mm, अब मतलब आप थोड़ा बहुत, जितना थोड़ा बहुत मैं पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स को पढ़ता हूँ, एवरीवन कीप्स ऑन सेइंग द सेम थिंग कि यार आपके जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है. आपके जो लैंडलॉर्ड्स हैं एग्रीकल्चरल होल्डिंग जिनके, उनके ऊपर कोई टैक्स हुआ नहीं है. अब mm, इसमें IMF को या वेस्ट को या किसी की बैल्कनाइजेशन थेरी को की जरूरत नहीं है. दिस इज प्योरली अ डोमेस्टिक इशू कि आपको पता है कि जो द पीपल हु होल्ड कैपिटल इन दिस कंट्री आर नॉट विलिंग टू पुट देमसेल्व्स इन द mm. टैक्स नेट. But आपकी एक Moshe, छोटी sorry, I will interject you here.
But don't you think when I was coming to this point that from what I know, that whenever the IMF policies, because I've been studying this subject for like 2 years, there's a very economic indicator that shows that the premium on capital, so if you have money, it will increase, and premium on wage decreases. So, in my opinion, don't you find that the elite itself benefits from it? So, the masses, the people never had the chance in it. So, when they say balkanization is there, I think the IMF structural programs do pave way for us for a Western capitalism and the local elite nexus uh, becoming very strong, and then capturing the government. And when you've captured the government, then it's very easy to, just hold your own policies, and people being frustrated, their social protections being taken away from them, making them extremely vulnerable. And then those anxieties come in form of protest and all that. So I don't you देखिए, think? जो आप बात कर रहे हैं, आईएमएफ आपको कहता है कि आप अपने खर्चे कम करें। सो आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप एक Hmm. सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम खत्म कर दें, या Hmm. आप अपने अमीर लोगों को टैक्स नेट में ले आएं और उनके प्रिविलेजेस थोड़े कम कर दें। सो आप क्या कहते हैं कि हमें प्रिविलेजेस तो चाहिए, Hmm. हम 40 गाड़ी के प्रोटोकॉल को 10 गाड़ी पे नहीं लाएंगे, Hmm. लेकिन चलो ठीक है, हमें सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। Hmm. सो एंड But अगेन the इट idea is गोज that the बैक people, टू, yeah, the people here are most of the people IMF is talking to are the elite themselves. मतलब So दैट्स द मैटर ऑफ फैक्ट ना कि गवर्नमेंट उनके पास है, लेकिन आप ये देखें, आप आईएमएफ के पास जा क्यों रहे हैं? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने it's again the elite देखिए, has very different interests in Pakistan as compared to masses. I would say, like, I- I- when I say मतलब आई वुड we, से दैट्स ट्रू, not बट the दैट्स आल्सो Pakistani ट्रू people, एवरीवेयर। it's the we, the Pakistani elite, which is a different subgroup in my opinion as compared to normal Pakistan. No, no, you're right. Like, I see that's true, but that's true everywhere. Matlab, as Mm, much as I would say that the Pakistani elite has their fair share of faults in this regard, mm, like, the elite is the same everywhere. So, mm, but I don't, I like going back to your original question, I don't really think I buy into this balkanization theory wali baat. If anything, I think जो mm, पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, on so many indicators we are doing so poorly. I think mm, I think the only thing that at some point keeps us relevant at this point is our nuclear weapons, कि यार अगर ये मुल्क okay. collapse कर गया तो इनके 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 हथियारों का क्या होगा? So I think and Yeah. these are all, points for introspection कि how we Mm, can change the course, मतलब have mm, proper improvement in Pakistan। यही कोई ऐसा कोई मेजर ना लें जो 5-6 साल के लिए आपको थोड़ा स्टेबल करता है, लेकिन उसके बाद देयर इज एन इवन बिगर स्लम्प। आई थिंक दैट्स बीन आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम कि व्हाई आर वी नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दिस दिस रिपीटेड साइकिल ऑफ आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंसी हो या सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। हम क्यों नहीं निकल सकते? क्या वजह है कि हमारे जिनको हम ट्रेडिशनल अपने एलाइज कहते हैं, अपने दोस्त कहते हैं, एवरीवनस लाइक यार नहीं, मतलब यू टू बिग अ प्रॉब्लम, सो सम mm, देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड mm, दैट वो चीज़ है जो हमें डोमेस्टिकली वी नीड टू पुट दैट इन ऑर्डर mm. I agree with you on this point that Pakistani nuclear weapons are probably the only thing that makes us relevant here internationally. That is at this something point. at this At point, this point, definite. मतलब But यार, and देखें, and mm, it's the disappointing thing is कि it's been such a fall from grace in recent times. So for example, yeah. आजकल uh, big topic everyone talks about is the Palestine Mm, issue, right? If you mm, look at the history of the Palestine issue, mm. Pakistan was actually the country जिसको आप कह सकते हो, मतलब we can claim कि we put the issue on the map. In Yeah, our diplomats, the earlier yeah. parts of our history, says Zafrullah Khan, and Mm, उन्होंने इस इशू को इतना हाईलाइट किया at an international level. So we were playing a very active and a very positive role in all of mm, global affairs. mm, So mm, which is why I think the current slump hai, which is even more disappointing. So you're not a country that's used to being at the bottom. yeah. Um, लेकिन We were अब on the आप mid हो, level always, yeah. At least not in this bottom level that we have अब gone आपको into. पता है कि Pakistan's passport is even less powerful than North Korea. Which is a pariah state by all metrics, and everyone just calls it Yeah, that. Like, your and for human that development index is like it's like just top bottom 30. हाँ, We हर are चीज में तो आप, and that basically tells you around your Sudan. position. Yeah, yeah, yeah. So Yeah. yeah, that is something. And again, at the same time, we are performing so badly in these indicators, but we are a nuclear weapon country. We are ranked in top 10 of the firepower index and all that. So so it's a very interesting country in that it's a huge economy in the sense that it's like fifth largest country in terms of population. So there is a contrast.
in this country. अभी भी But आपने न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात की, सो वी रेफरेंस द न्यूक्लियर थ्रेट न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो आती है 2023 की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान एक्चुअली इंक्रीज्ड बिटवीन hmm, 2020 एंड 2023 वाली जो रिपोर्ट है, hmm, पाकिस्तान इंक्रीज्ड इट्स स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स ग्रेड फिसाइल मटेरियल. hmm, सो यू नो वी ऑलवेज हैव उस तरफ हम, एंड अगेन from a security perspective I don't really call it a bad thing, but hmm. at the same time so much else is happening in the country, so really makes you wonder. Hmm. Yeah, I agree with you. On the nuclear weapon thing, I totally agree with you. That's one of the best things we have right now in terms of our protection. But on the IMF thing, I will slightly disagree. I will not say that there is an agenda that IMF is being used to balkanize Pakistan. But what I do know, Thaw, is that the IMF programs really change when the geostrategic interests are changed. Like we have seen consistently in with some countries that if the geostrategic objectives align with the Western powers, the conditions are less hard. That is something we have, No, no, so seen that quite a lot. that that I agree with. So देखें, Uh, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ना कि अ, अगर मेरे और आपके ताल्लुकात इस वक्त अच्छे हैं और मैं mm, आपको फेवरेबल टर्म्स पे एक लोन देता हूँ mm, अपने घर के इशू सॉल्व करने के लिए, आपके घर की mm, पेंट की ज़रूरत है. सो आप mm, कहते हैं यार इस वक्त मुबशर के साथ मेरे हालात ठीक हैं तो मुझे आइंदा भी कर्जा मिल जाएगा, तो पेंट तो मैं बाद में करा लेता हूँ, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ. नहीं. mm, mm, और फिर जब मेरे और आपके हालात खराब होंगे तो फिर आप रोना शुरू कर दोगे, यार पहले तो आप पैसे दे रहे थे, अब आप मेरे हमसाए को mm. पैसे दे रहे हो. एक रियलिटी है. अब all these international I, institutions, I, I, political I, I, it's a reality. I do agree with you that we have our own share of faults, but Yeah. I think IMF is not just a lone entity. It is No, no, paving way for absolutely it's not. I completely agree with you. It's liberalization, not. Uh, allowing the Western economies to come into poor countries and exploit them. So I do think that IMF is something more than just a lone entity. But also yeah, लेकिन I फिर do अगर believe that इसमें if I was to argue back इस पे, hmm, is that only the IMF that's allowing it? So I अगर think आप सीपेक को देखते हो, सीपेक में भी uh, तो हमने खुद वॉलंटरली चाइनीज को अलाउ किया टू कम Chinese इन. don't intervene so ऑब्वियसली much उसके into बेनिफिट्स our हैं, उसकी fiscal डेवलपमेंट है. policies and monetary policies and very nitty-gritties. They don't come to that level. They give नो, नो, loan यू and आर they say, राइट. मतलब लेकिन माय पॉइंट इज दिस कि आप, सो मेरा आर्ग्यूमेंट हर चीज में ये है कि आप अपने आप को उस पोजीशन पे पहुंचाओ कि hmm, whether that's the IMF, whether that's some Chinese lender, whether that's hmm, XYZ, we really don't hmm, care. Get your own house in order, do proper reforms in a way कि आप एक मुल्क एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं. Then you are able to push back and dictate some of your own terms. अभी हम इतने डिपेंडेंट हैं इन हालात के ऊपर हैं कि मतलब वो आई वाज लिसनिंग टू समवन द अदर डे, दे सेड कि हमारी सैलरीज भी कर्जों से जा रही हैं इस वक्त हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की. सो जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं, यू डोंट रियली हैव एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग yeah, पावर. IMF कहता है yeah, उठ yeah. जाओ आप उठ I जाते हो, वो कहता है बैठ जाओ आप बैठ जाते हो. yeah, I agree. And but here, just I will say that when use the word we, I only mean the Pakistani elite because there's interest groups in Pakistan, which includes the billionaires and some state officials, and they are even I think the academics have done a very horrible job in this. And there's some kind of slumber party happening in Pakistan among the Pakistani elites where they want to keep the economy although it's a big country which has to have a big potential. But I think the Pakistani lead, the mindset of the Pakistani ruling classes is to be a big fish in a small pond. So they don't want this country to have that level. Even if I see the biggest companies in Pakistan, they have done joint ventures. They brought the Toyota from outside. They did a joint venture, and gave them an oligarchy, and they did whatever they had to do. They never thought that we have so much capital. Let's have our own car. Come on, let's import the इसके technology as ऊपर well. जब सुजुकी Mm, का आई थिंक, एंड आई कुड, आई if I recall correctly, सुजुकी was the first फॉरेन ऑटो असेंबली जिन्होंने 80s में, जब नहीं नॉट द फर्स्ट, लेकिन जब उन्होंने 80s में अपना शुरू किया था, आई थिंक इफ आई रिकॉल करेक्टली देयर वाज अ क्लॉज दैट दे वुड मूव फ्रॉम असेंबली टू लोकल मैन्युफैक्चर, एंड इट्स बीन 30 but 40 they years never that's. did, I think, properly. लेकिन I think the elite, I would just phrase it a bit differently. I think the elite does want to Pakistan to do well. Obviously, that's why they remain the elite. अगर ये मुल्क नहीं होगा, मुल्क बिल्कुल कोलैप्स करेगा, तो फिर कौन सी elite और कैसी elite? We've Yes, seen कि that the I agree. the That they at Afghan least elite want when they Pakistan to exist. That's Afghan the only elite thing, though. when you no, no, so you've Yeah. seen how the Afghan elite when they left Afghanistan, and वो जो They US गए हैं, got कोई उनका rid. पुराना Yeah. कमांडर जो है कोई टैक्सी चला रहा है, कोई क्या कर रहा Yes, है. yes, सो yes. दे नीड पाकिस्तान. आई थिंक जो सैक्रिफाइसेस की जरूरत है टू मेक हेल्प पाकिस्तान कम आउट ऑफ दिस,
I think a lot of people are not willing to take that. And it's very interesting That's कि हम लोग किस तरह न्यूक्लियर से शुरू होते होते पाकिस्तानी elite के ऊपर आ गए. yeah, that's something I think we digressed in the end little. Yeah. But yeah, but I agree with you on most points except some we have some spirited debate in the end, but that's fine. We'll talk later about it. But it was lovely talking to you, and thank you so much for time. I know you had a very busy schedule at this time, and I really appreciate you coming here. It's something that what I was very interested in international nuclear laws. Like there's something that fascinates you, but you don't have like the knowledge for it and you want to learn about it. So I read your article and then I invited your podcast to for podcast, which is really good learning for me. So I thank you Well, for thank you for coming having me. It and was a pleasure speaking with you as well, and um, uh, really interesting hearing your views as well. Arfa, and I hope you come to Pakistan in our studio and we have in-person conversation sometime. So thank you Inshallah. so much. Yeah. Thank you, Shahzeb. Thank you. Allah Hafiz. You.